पिला माने द प्राइसलेस गिफ्टटा तुम भल भाव बुझिल आउ तार किछि तुम मानक पई वर्तमान 5 नंबरिया प्रश्न मु आलोचना करुच्ची सेटा शुण। फर्स्ट प्रश्न हला व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जो जाइथिले से दिन लंच टाइम रे से कौन ताकर अनुभूति से हासिल कले। 5 नंबरिया प्रश्न आसी पारे परीक्षा रे। तुम तो जानिछ द राइटर वेंट टू द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट at lunch time. The restaurant was crowded. Writer noticed that some chairs and tables had been pushed into a corner, and the writer chose the corner table, and he started skimming through the newspaper. अच्छा इटा तुम लिखिपर नोट रे जदि आउ किसी थो टे आड कराई देख नोट खाता तुम लिखि सारी से तुम देख। व्हाई डिड द राइटर चोज द कॉर्नर टेबल। कॉर्नर टेबलटा कहीं से बाछिले। पिला साधारणतः किसी लोक भिड़ बसापी पसंद करते तेणु जो देखिले द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड देयर माइट नॉट हैव बीन एनी सीट in the middle of the dining hall, and when he noticed the some chairs and tables in the corner, he chose the corner table where he could sit alone and have the dinner peacefully. ये भी नोट रे अच्छी तुम से शिखिव। What made the writer surprised? Writer कहीं आश्चर्य हो गए। The writer noticed a young girl looking at him again and again. She also inquired the cashier about the writer, and before leaving the hotel, she looked at the writer again. The writer wondered why the girl was interested in him. So the writer was surprised. नोट रे प्रश्न उत्तर मध्य तुम्हें पढ़ी कि मन रखियो। How did the writer guess that the girl was poverty stricken? राइटर केमिति अनुमान कले जे झीटी दारिद्र्य द्वारा पीड़ित बोली। तुम देख द राइटर आस्क्ड द वेटर इफ ही had known about the girl, but the waiter replied that he had noticed the girl comes to the restaurant only on the Saturdays, which is the payday. From this, the writer guessed that the girl was poverty stricken. है ना नोट रू तुम पढ़ो। I was moved by what he said. What impression did the writer get about the girl? वेटर जो कथा कहला से लेखकों मनरे लेखकों मनरे प्रभाव पकेला। लेखक मनरे तने कौन प्रभाव पड़ा झीटी विषय कौन भाविले से ऊपर क्वेश्चन जहाँ आंसर से ही टाइप रो ही हेबो। When the writer asked the cashier about the girl, the cashier replied that he had noticed the girl coming to the restaurant only on Saturdays, which is the payday. From this, the writer guessed that the girl was poverty stricken or a poor girl, and he felt that the girl needed her help. ये आंसर टा लिखियो। What impression did the girl have on India?
झीटीर ता छड़ा मिस्ट्रेस बेथीर कौन इंप्रेशन थिला दे थॉट दैट देयर वेयर many snakes and tigers in India and the snakes and tigers must be killing the people. So they had an idea, impression that India is not a safe place to live in, which was a wrong notion, wrong idea, or not. What did Mistress Betty believe about the ring? Why did not the writer tell her about the truth of the ring? लाम तुम जानिच फ्रांकी इंडिया रू कौन करथिला गोटे रिंगटे पठेइथिला ना ता सहित गोटे चिठी भी लिखिथिला मिछ कथा लिखिथिला कौन लिखिथिला जे फ्रांकी सेंड ए रिंग टू मैगी and wrote a letter that if anybody concentrates on a distant person by gazing at it, he or she would be able to see the distant person and what he was doing there. But Mr. Gupta was sure that this was an ordinary ring. But he did not want to tell the truth to Maggie and Mistress Betty because he did not want to shatter their dreams. Okay? What made the author tell a lie about the ring? What was its effect on Mistress Betty? तुम जानते हो सेकेंड टाइम जिते बड़े मिस्टर गुप्ता गले कहार को मैगी घर को मैगी वाज सॉरी मिस्ट्रेस बेथी वाज seriously ill and Maggie said that she had never been in such a bad condition. So Maggie requested Mr. Gupta to tell a lie. She requested Mr. Gupta to look at that ring and tell a lie that Frankie was alive and he was fine. Mr. Gupta, after thinking some time, was ready to do it. He also did it. He came near Mistress Betty, wished her a good afternoon. Then he good afternoon, good morning, wished her a good morning. Then then after looking at the ring, he told Mistress Betty that Frankie was alive and well. And what was its effect? It had a good effect on Mistress Betty. He soon raised her head. She soon raised her head of the pillow and soon she recovered. तेणु यहाँ गोटे 5 नंबर क्वेश्चन तुम मैंने पढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी why did the writer feel ashamed to face Mistress Betty at the time of his return to India? जिते भारत को तंकर फेरिबार थिला सही समय रे से जो जाइथिले मिस्ट्रेस बेथी और मैगी को गुड बाय कहवाई से समय कौन देखिले से जानिच यहीटा ऊपर आंसरटा है. When Mr. Gupta visited Mistress Betty and Maggie before his return to India, he saw the family members were in mourning. देखिले से माने विलाप करुछंती. He calculated and found that Frankie had died some days ago, some days before he told the lie to Mistress Betty that he was alive and fine. So he felt ashamed to face Mistress Betty. He could not face Mistress Betty and he wrote a letter to them announcing his departure. तेणु मिछटा तो कही देथिले धरा पड़गला. मिस्ट्रेस बेथी ताने जानीपारचंती जे मिस्टर गुप्ता मिछ कही देथिले मते मो पुओ मरी सारिलाणी ये किंतु कहीदेले मते बंचीजी बोली. तेणु लेखक को खराब लगिला, नाज लगिला. केमती मिस्ट्रेस बेथी को सी फेस करेंगे जापरें. चिठी खंड लिखिदेले जे मु भारत ये जो इंग्लैंड छाड़ी पलैबी बोली है. यार प्रश्न उत्तर भी तुम मैंने पढ़. Why was Maggie grateful to Mr. Gupta
मैगी कहीं मिस्टर गुप्ता मिस्टर गुप्ता ठारे ऋणी है बोली अनुभव सी कर मैगी केम टू मिस्टर गुप्ता बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंडिया हाँ कि नहीं से दिन सकाल सकाल आसला कि नहीं मैगी आसला कि नहीं मिस्टर गुप्ता पाक आसला से समय से कौन कहला जे फ्रांकी हैड बीन बरीड नियर द फ्रंटियर and Mr. Gupta said that when he would visit the frontier he must visit Frankie's grave and write a letter to whom? Write a letter to amra Maggie. Okay. And Maggie, could not visit the grave of Frankie. He could not meet the Frankie before his death. So when Mr. Gupta said that he would visit the grave of Frankie and write a letter to him, her Maggie was grateful to Mr. Gupta हाँ कि नहीं नोट रे अच्छी प्रश्न उत्तर पड़े why was the sealing Maggie presented to the writer was an invaluable offering Maggie जो गोटे सीलिंग देइथिला काहाकू मिस्टर गुप्ता को सेटा काई गोटे अमूल्य उपहार because he had earned that ceiling by doing hard work बहुत कठिन परिश्रम करके रोजगार करथिला आउ से जो सीलिंगटा से रोजगार करिथिला से सीलिंगटा ता पई बहुत मूल्यवान आउ एटा ता पई गोटे बड़ सैक्रिफाइस थिला ता पक्षरे से गोटे सीलिंगटा भी बहुत बड़ ता भाई प्रति थिबा भल पाइबा पे से सीलिंगटा को सैक्रिफाइस करथुला तेणु राइटर को लगला एटा होची गोटे इनवैल्यूएबल ऑफरिंग हैला ए नोट ए विषय रो एक नोट रे उत्तर अछि तुमे माने ए सब प्रश्न रो उत्तर को पढिबो बारंबार पढी कि लेखि कि मन रखियो म तार टेस्ट 2 दिन परे करबी आज हैला तुमरो की बार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार दिन टेस्ट हो हां ठीक है।